grossly offensive or has a menacing characters. Sending information on to be false. IT Act में Cyber Act में केस है. To be false or causing annoyance, anger, inconvenience, etc. Persistently making use of computer or a communication device to cause annoyance. Computer device. It's quite clear that all the above provisions are quite vague and broad. Anyone's annoyance and anger are subject questions which vary with the individual. Article 19A Constitution provides citizens of India with freedom of speech and expression. Clause 2 of the article restrict करती freedom in the interest of sovereignty. Sovereignty को ये आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट करता है और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया भारत की एकता के लिए इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट फ्रेंड रिलेशन पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी एंड मोरालिटी नैतिकता and to prevent contempt of court. Provision in the section 60C restrict the freedom of speech without clearly falling under the exception mentioned. Mentioned हुआ है भारत में देशद्रोही लगा देते हैं. किसान चुनाव लड़ेगा. किसान 7 लाख पंचायत इन इंडिया बट पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ रहा है without permissions of an officials. Provision of section 60 restrict freedom of speech without clearly falling under any exceptions mentioned in Article 19. Exception: the assurance given by government that section will be applied in a reasonable manner and the arrest will not be made without permission of an official not below the rank of an Inspector General. IG of police is not born out by recent incident. Where individuals were arrested for small offences के लिए. There is also worry that police are influenced by political parties and arrest individuals. Where the police are influenced by political party might be made to satisfy political leaders. Political leaders को satisfy करते हैं. While the need to prevent criminal intimidation and danger through the social media and the internet are recognized, those sections goes a bit too far and curbs the freedoms which are held dear in the democracy and free society. Actually, section 60 IT Act to prevent grossly offensive material for circulating freely and internet में offensive materials. It provision also vague that the liable to misuse as a clever from recent intelligence. Section 66 IT Act 66 restrict freedom of speech without clear falling under any. भारत में जो किसान स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं मिलके चुनाव इन कंटेस्टिंग इलेक्शन 2029 में भारत में 543 MP से कम किसान होना चाहिए. स्टूडेंट्स नेट एग्जाम हर एग्जाम इज सेलिंग क्वेश्चन लीक नेट एग्जाम लीक्स सो नॉट प्रोटेस्ट करके पुलिस से डोंट बीट बाय द पुलिस. आप लोग पुलिस से पिटाई मत खाओ. चुनाव लड़ो. देश में चुनाव. सुप्रीम कोर्ट इंडिया कीप्स चेक. सुप्रीम कोर्ट भी डरते ना. सब आदमी हैं. कोई भारत को आएगा भारत को अच्छा कर लेगा. डोंट नेवर थिंक्स. देश के लिए आप चुनाव लड़ो. देश के लिए सरकार बदलो. देश में नॉट बिलीव इन एनी पॉलिटिकल पार्टीज. देश में हमारा देश 200 साल हमको आज़ादी छीन गया. अभी भी वैसा बात है. स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इलेक्शंस. अपना बात खुद जाके करो पार्लियामेंट में. किसान कर्जा माफ किसान को नहीं होता है. कौन देश अमीर लोग पैसा बांटते हैं डिस्ट्रीब्यूट मनी इन द इलेक्शंस एंड दे मेकिंग पॉलिसी बनाने के लिए हम लोग को पार्लियामेंट जाना पड़ेगा. कर्जा माफ नहीं तो कर्जा तो पॉलिटिकल पार्टी जो अमीर लोग 500 करोड़ 100 करोड़ देते हैं पार्टी को एंड दे गेटिंग सब्सिडी 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ कर्जा माफ होता है. वो 1000 करोड़ दे देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को. तो
गरीब किसान मिलके देश की 140 करोड़ नौजवान चुनाव लड़ो। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उन लोग भी डरते हैं, सबका अंदर डर है। इंडिया से भाग जाते हैं विराट कोहली, सब पैसा रख के विजय मल्ल्या। तो सेव इंडिया, चुनाव लड़ो, इलेक्शन लड़ो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू जुडिशियल रिव्यू ऑफ द डॉक्ट्रिन्स, सुप्रीम कोर्ट इंडिया कीप्स चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट। चेक करता है पार्लियामेंट को, माने पार्टियों को, जो कि सुप्रीम कोर्ट चेक करता है। अदरवाइज डिक्टेटरशिप हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर हैज इवॉल्व्ड ए सिस्टम ऑफ कीपिंग ए चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नेता कुछ भी कर सकते हैं टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्रिन बेसिस स्ट्रक्चर चेक इट। तो सुप्रीम कोर्ट कितना चेक करेगा? जनता तो कुछ नहीं करता है। द ओरिजिन ऑफ द इंटरवेंशंस ले इन कंसर्न फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटीग्रिटी। पॉलिटिकल पार्टी भी दबाव में है, पैसा लिया है ना चुनाव में, चुनाव लड़ने के लिए अमीरों से। ओरिजिन ऑफ द इंटरवेंशन ले इन द कंसर्न फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चुनाव लड़ो, डोंट अभी हिमालय को काट डालेंगे, अभी राजस्थान में जो हिमालय को काट डालेंगे, इधर कुछ भी जंगल को काट डालते हैं। बचाने के लिए प्रोटेस्ट मत करो। जनता प्रोटेस्ट हमेशा करते हैं, समय बर्बाद होता है। चुनाव लड़ो, पैसा कलेक्शन करो। भारत में 7 लाख गांव में सरपंच भी शहर के लोगों का है, अमीरों का है। पॉलिटिकल पार्टी गांव में भी इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन गोलकनाथ केस, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट का टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। नो लिमिटेशन पावर पार्लियामेंट। गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है। There was held as transcendental and immutables. Parliament thus could amend the constitution even though a constitution amendment act passed under the Article 368. मगर कुछ अच्छा जज है इन केस आनंद भारती केस another change was made. Now court said that parliament could amend any part of the constitution कर सकता है, मगर did not alter the basic feature of the constitution. Actually, don't भरोसा, भगवान की भरोसा में मत बैठो। कब भगवान हमारी भाषा में बैठे होंगे। नेवर बिलीव इन गॉड, इतना भरोसा। भगवान बिलीव इन ह्यूमंस। देश को आज़ाद के लिए लोग आए, जान दिए, तब जाके देश आज़ाद हुआ। तो किसान नौजवान चुनाव लड़ो। However, definition basic feature has not yet been given and only features are given basic features in different judgments. Judges believe that parliament is allowed unlimited power to amend the constitution. नेता कुछ भी कर सकते हैं, ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं, मगर अमेरिकन पीपुल्स चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? ट्रम्प कैसे लोग 2 बार कैसे सत्ता में आ जाते हैं? अमेरिका में भी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। जजेस बिलीव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज ए डेंजर्स इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुड बी कन्वर्टेड इनटू डिक्टेटरशिप हो जाएगा। रशिया ओनली वन पार्टी सिस्टम्स, चाइना डिक्टेटरशिप्स, नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप्स, ऐसे वेनेजुएला डिक्टेटरशिप्स। हमारा देश में भी वैसे हो जाएगा। कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई किसी को वोट नहीं देगा। स्टूडेंट पढ़ाई के साथ ऐसा होने से कुछ नहीं होता है। देश के लिए पढ़ाई करो, देश के लिए चुनाव लड़ो, एजुकेटेड करो, लोगों को एजुकेटेड करो। 2 करोड़ नौकरी वाले हैं, देश को मदद करो, एजुकेशन को सर्कुलेट करो। टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा टीचर्स क्वालिटेड टीचर्स होना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज इट कवर हेट स्पीच? Also, freedom of speech means why do films in India stand slightly different from other form of expressions? Freedom of speech is the civil right to express one opinion and ideas. हमारा बात one's body property to anyone who is willing to accept him. Using one's body and property to anyone दे सकता है, civil rights. Freedom of expression is interchangeably used from freedom of speech, but includes exchange of notions or materials irrespective of a medium used. Freedom of speech and expression are integral part of a modern liberal democracy and is a necessary tool for the citizens and the nations to grow.
फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए देश को, मगर इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ कॉन्टेस्ट इलेक्शन होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स टू ग्रो प्रॉस्पेरफुली, द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट अंडर आर्टिकल 19, Universal Declaration of Human Rights. Indian Constitution is a fundamental right under the Article 19 Fundamental Rights. 191 A talk about freedom of speech and expressions. Freedom of speech and expression is not absolute. नहीं. At the time of emergency, freedom of expression is limited. But freedom of speech is civil right to express one's opinion and ideas, express using one's body and property to anyone. Every government puts reasonable limitation to some extent. Every government puts reasonable restriction ला सकता है to use maintain equity and equality in society. Hate speech is perceived to disparage a persons and group people based on their social and ethnic groups such as the race, gender, age, ethnicity, nationality, religion, disability, ideology, occupation, social class. Article 92 of Indian Constitution talks about reasonable restriction है. 19.2 on the freedom of speech, expression of interest and sovereignty and integrity. So, the security of the state friendly relation with the foreign state, public order, decency, morality, or in the relation to contempt of court, defamation of the increment to an offence, defamation B. Section 499 and Section 500 Indian penal deal with criminal defamation. Criminal defamation भी है 499. What are the deterrent to hate speech? Hate speech नहीं होना चाहिए. Therefore, freedom of speech does not cover hate speech. Actually, it is not. पुलिस 1861 का पुलिस एक्ट अभी भी है. सेडिशन कानून अभी भी है, इंग्लिश का कानून. सेंसरशिप मीडिया के ऊपर अभी भी है. तो अभी भी इंडिया पाकिस्तान आर्मी डिवाइडेड टू हुआ था. वही भी ब्रिटिश मानसिकता अभी भी है, ब्रिटिश आइडियोलॉजी. Therefore, freedom of speech does not cover hate speech. It is not acceptable by society and against the definition of freedom of speech. Hate speech नहीं है. Films in India have a wider acceptance due to large audience.